Hello everyone, this is Chandan and I welcome to my channel, the Learning Field. Okay, so this is the 100 question practice PDE series and this is session 8. Earlier we have already discussed about 7 sessions. We have already completed 7 sessions and 80 questions of PDE. Okay, so in this lecture, in this session, we have covered the 10 questions from question number 81 to 90. Okay, and these questions involve very interesting problem on PDE. Okay, so those who are not watching the previous lectures or previous sessions, I am requesting you to all, I am sharing the link in the description and also here in the I tab. Okay, so you can check those links for your practice session for your upcoming CSIR NET and GATE exam. Okay, and one more request is that those who are new in my channel, please like the video, comment if you have any doubt in the comment section below, and subscribe the channel. Okay, and support me to grow the family. Okay, so let's start with question number 81. The question number 81 says that the initial value problem for the partial differential equation del u del t plus del t del x2 this is equal to 0 for u x0 equal to sin pi x has the solution of the form u xt equal to phi t into sin pi x. Then the what about the function phi? Okay, so first we have apply. Now we apply here for the equation given that ut plus uxx this is equal to 0. Okay, so now if we apply the Laplace transform, okay, so if we take Laplace to both sides, so Laplace of ut plus Laplace of uxx this is equal to Laplace of 0 means 0. Okay, so this means what? This means autt means s and u bar means function of x and s plus ux0. Okay, since Laplace of this is equal to, we have already discussed in the earlier video of, about something Laplace transform. Okay, plus d2 u bar dx square this is equal to 0. Okay, so this implies d2 u bar dx square plus s u bar this is equal to u of x0. Okay, and the value of u x0 means sin of pi x. So we first solve and then see the solutions and compare with this. Okay, then we get the value of the function this phi t. Okay, so u x0 this is equal to sin of pi x. Okay, sin of pi x, and we know that we just calculate the particular integral. Okay, so the particular integral we calculate u bar x and s this is equal to 1 by d square plus s on sin of pi x. Okay, where the d means d dx. Clear? D means d dx. So this implies sin of pi x by minus of pi square plus s. Clear? So this is equal to that means this implies u bar x and s this is equal to sin of pi x by minus of pi square plus s. Okay, now if we take inverse Laplace transform, so take now inverse Laplace. If we take inverse Laplace transform, then we get uxt this is equal to Laplace inverse of sin pi x by minus of pi square plus s. Okay, and since Laplace transform we take on the variable t, and since therefore x is outside the inverse. Okay, so sin pi x and this Laplace of this term means what? Exponential power pi square into t. Okay, so this is the Laplace transform. Since we know that Laplace of s plus a this is equal to e to the power minus of at, and if we take here minus, then this should be plus. Okay, so Laplace inverse of this equal to this. Okay, so now the given that therefore देखो यहाँ पे इससे कंपेयर करो जो फंक्शन है यहाँ पर, जस्ट मिनट, देखो यहाँ पे जो फाई टी इक्वल टू क्या होगा? सो फाई एक्स टी गिवन है, फाई एक्स टी इक्वल टू जो गिवन है तो फाई सॉरी यू एक्स टी इक्वल टू गिवन है फाई टी इंटू साइन ऑफ pi x. Therefore if we compare this we get pi t equal to e to the power pi square t. Okay, so this is the
phi t. Now we go to the problem again, and it is given that phi is always negative, phi is always positive, phi is इंक्रीजिंग एंड phi is डिक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये t का वैल्यू कोई भी नहीं लो, ठीक है, क्योंकि phi t जो है t के ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ ओनली वन वेरिएबल। t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एनी वैल्यू, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और माइनस कुछ लोगे तो ये क्या है, 1/e which is greater than 0 for any value of t, okay, so this is similarly strictly greater than 0, okay, that means phi is always an increasing function and exponential function means always increasing, and a increasing function होगा, and ये देखो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी एक्सपोनेंशियल, मतलब phi डैश t जो आएगा वो क्या आएगा, पाई स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल पाई स्क्वायर टी आएगा, ठीक है। तो ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, दैट मीन्स फाई इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड फाई इज ए क्या था जो ऑप्शन था पॉजिटिव, ओके, ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स फाई, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर बी, फाई इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फाई इज इंक्रीजिंग, ठीक है। इसमें देखकर आप लोग क्लियरली बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बी एंड सी ऑप्शन क्लियरली करेक्ट है। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 82. The question 82 says that a bounded solution for the partial differential equation del u del t is equal to del t del x2 plus exponential minus t is. तो देखो यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर t greater than 0, दिस वी नीड दिस कंडीशंस, अदरवाइज वी कांट से एनी ऑप्शन, ठीक है। तो प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉरी ये ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है एक्स के बारे में कुछ तो मतलब कंडीशंस गिवन नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स जो होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाँ जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एक मेरे को जो मिसिंग लग रहा है कि वो t ग्रेटर देन 0 था तो क्वेश्चन अच्छा खासा होता, क्योंकि देखो ये t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो एक भी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट x टेंड्स टू x के बारे में कुछ नहीं बाउंड्री गिवन है, दैट मीन जो x इंक्लूडेड जो ऑप्शन है वो तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी अनबाउंडेड होगा, ठीक है, सभी के सभी अनबाउंडेड होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी बाउंडेड अनबाउंडेड, ये भी अनबाउंडेड, देन the only options compatible options is option number A, and you can also check put the value of uxt in this equation, you get the देखो कि ये इस जो क्वेश्चन गिवन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा विद द कंडीशंस t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, t ग्रेटर देन 0 होता तो अच्छा होता, एंड ये आप चेक करो कि ये सेटिस्फाई भी कर जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं which is question number 83. Question number 83 says that let uxt be the solution of the heat equation ut minus uxx, this is equal to 0 whether 0 less देखो यहाँ पर हीट इक्वेशन में ये कंडीशंस गिवन है, ठीक है, t ग्रेटर देन 0 कंडीशन गिवन है, तो हीट इक्वेशन के केस में t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वो आगे वाला क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर u0t इक्वल टू u पाई t इक्वल टू 0 एंड ux0 इक्वल टू sin x प्लस sin 2x और 0 लेस x लेस इक्वल टू पाई, then there are 4 options are given. So the options जो है क्वेश्चन जो है ut minus uxx this is equal to 0, that means ut this is equal to uxx होगा, ठीक है। now if we apply Laplace transform, just a minute, हाँ तो देखो Laplace of ut this is equal to Laplace of uxx, ठीक है, and Laplace of ut means s u bar xs minus ux0, clear, and this is equal to d2 u bar dx square, clear. Now this implies d2 u bar dx square minus s u bar, this is equal to minus of ux0, clear. Now ux0, the value of ux0 is given here, the sin x plus sin 2x, that means d2 u bar dx square, this is equal to this is x square minus s u bar, this is equal to sin x plus sin of 2x, clear. That means u bar x s, this is equal to 1 by d square minus s into sin x plus sin of 2x, clear. Now this is equal to
1 by d square minus s sin of x plus 1 by d square minus s, just a minute, 1 by d square minus x of sin 2x. Okay, so this is equal to 1 by d square minus x sin x means 1 by minus of 1 square minus s sin x plus 1 by minus of 2 square means 4 minus s into sin s. Clear? Sin of x 2x. Okay, this is equal to sin of x by minus s minus 1 and plus 1 by s minus 4 minus s minus 4 into sin of 2x. Clear? जस्ट मिनट, सॉरी यहाँ पर एक माइनस माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इधर आ जाएगा, ये माइनस माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस माइनस होगा, माइनस एंड माइनस. सो this is implies this is equal to sin x by s plus 1 plus sin of 2x by s plus 4. Clear? So this is now if we apply, take Laplace inverse, then L Laplace inverse, then uxt, this is equal to, we get what, we will get sin of, क्योंकि ये x के ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, L inverse 1 by s plus 1 plus sin 2x into 1 by L inverse 1 by s plus 4. Clear? So this is equal to, ये कि इसका लैपलास इनवर्स क्या होगा, e to the power simple minus t into sin x plus e to the power minus 4t into sin 2x. Clear? This will be the Laplace transform. So the solution is this uxt equal to this. Uxt equal to, right here, uxt is equal to e to the power minus t sin x plus e to the power minus 40 into sin of 2x. Clear? Now we go to the question. The question given that uxt tends to 0 as t tends to infinity, x belongs to 0 pi, and then t square uxt tends to infinity, तो देखो, and e to the power t, तो t फर्स्ट जो ऑप्शन है uxt tends to 0 but t tends to infinity. ठीक है, तो देखो at t tends to infinity, this term तो is bounded, x belongs to any term, sin function is bounded, we all know that, तो sin तो bounded. ठीक है, जो मेनली यहाँ पर डिस्कशन होगा वो t के ऊपर होगा. तो देखो as t tends to infinity जो है e to the power minus t tends to 0 also, and e to the power minus 40 is also tends to 0. That means uxt clearly tends to 0. ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो ट्रू ऑप्शन है. ठीक है, नाउ गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, टी स्क्वायर uxt. ठीक है, तो टी स्क्वायर uxt मीन्स, देखो ऑप्शन जो बी है, टी स्क्वायर uxt इज इक्वल टू क्या होगा, तो टी स्क्वायर साइन एक्स बाय एक्सपोनेंशियल टी प्लस टी स्क्वायर साइन 2x बाय एक्सपोनेंशियल 40. एंड देखो यहाँ पे और एक बात देखो, जो t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये जो टर्म्स है e इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ, बट ये जो है वी ऑल नो दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कन्वर्जेस और जो जाएगा इन्फिनिटी तरफ मोर रैपिडली देन द एल्जेब्राइक फंक्शन. दैट मीन्स ये इसका वैल्यू जो होगा ये ज़्यादा इंक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स ये भी 0 की तरफ जाएगा. एंड सिमिलरली ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कन्वर्जेस मोर रैपिडली देन एल्जेब्राइक फंक्शन. फॉर दिस रीजन दिस टर्म आल्सो टेंड्स टू 0. दैट मीन्स ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नाउ गो टू द ऑप्शन 3, e टू द पावर t इंटू uxt. ऑप्शन सी जो है e टू द पावर t uxt xt, दिस इंप्लाइज एक्सपोनेंशियल. तो देखो ये जो ऑप्शन आंसर क्या आया था, e टू द पावर t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगा e सिंपली 1 हो जाएगा, एंड सो दिस मीन साइन एक्स प्लस, सो ये जो सिंपल टर्म आएगा साइन एक्स प्लस e टू द पावर माइनस 3t होगा एंड साइन एक्स होगा. ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये तो बाउंडेड फंक्शन है, सो ये भी टेंड्स टू देखो क्या है
e to the power tends to is a बाउंडेड फंक्शन फॉर दिस एंड t ग्रेटर देन 0 गिवन है, ठीक है। तो t ग्रेटर देन 0 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि sin x फंक्शन बाउंडेड है फॉर x बिलोंग्स टू r, ये भी बाउंडेड है, एंड e to the power -3t दिस इज इक्वल टू 1 बाई e to the power 3t व्हिच इज लेस देन क्या होगा 1 होगा फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0, क्योंकि t लेस देन 0 का तो ये -∞ तक जा सकता है, तो यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है t ग्रेटर देन 0 करके, तो दैट मीन्स ये एक बाउंडेड फंक्शन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट है, एंड ऑप्शन डी जो है देखो u e to the power 2t uxt, तो u e to the power 2t uxt ये क्या आएगा देखो माइनस टी था फर्स्ट, तो e to the power ये t आएगा साइन एक्स प्लस e to the power 40 था तो -40 था e to the power -2t आएगा इंटू साइन ऑफ 2x। तो देखो यहाँ पर ये t टेंस टू इन्फिनिटी में ये जो टर्म है ये क्लियरली इन्फिनिटी तरफ जाएगा, ठीक है, ये कभी भी 0 की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट देखो इंटरेस्टिंग आज का जो सेशन है, मतलब इस सेशन में प्रॉब्लम्स जो है एक अच्छा खासा प्रॉब्लम्स में यहाँ पर लेके डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके। सो देखो a function uxt satisfies the wave equation this if these conditions are given then the value of u half and 1 will be okay। तो देखो ये कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर वेव इक्वेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दो केस है, ठीक है। एक है डी लैम्बर्ट एंड अदर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म से अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लैप्लास में कोई इनिशियल कंडीशंस मतलब u(x0) जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है, u(x0) गिवन नहीं है। सो यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग डी एलम्बर्ट सोल्यूशन, ठीक है। एंड डी एलम्बर्ट सोल्यूशंस में और एक चीज़ है जो कि है देखो यहाँ पर तो u(x0) गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे u(x0) को f(x) कंसिडर करेंगे। यहाँ पर डी एलम्बर्ट में इसका कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो u(x0) इक्वल टू f(x) एंड ये तो है c का वैल्यू तो 1 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन वो क्या होगा u(xt) इक्वल टू हाफ इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी, ये होगा इसका डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ जो कंडीशंस गिवन है क्या है u हाफ 0 इक्वल टू हाफ, सो u हाफ एंड 0 इज इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स 1/4 इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ऑफ हाफ प्लस एफ ऑफ हाफ, ठीक है, एफ ऑफ हाफ प्लस एफ ऑफ हाफ, so this is equal to 2 into f of half, that means ये जो होगा सॉरी सिंपली 2 हाफ इंटू 2 हाफ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ऑफ 1/2 का जो वैल्यू होगा दिस वैल्यू विल बी 1/4, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो कंडीशन गिवन है u 1 and 1/2 this is equal to 1, so this implies we just put the value here, so this is equal to 1 equal to half into f of 1 plus 1/2 plus f of 1 minus 1/2, clear। so this is equal to देखो half into f of 3/2 plus f of 1/2, ठीक है। so this is implies देखो 2 equal to f of 3/2 plus f of half, the value of f half will be 1/4, we just calculate this, so plus 1/4, that means जो होगा f of 3/2 this is equal to 2 minus 1/4 and this is equal to 7/4, clearly clear, this will be get this। and now the third condition is u 0 half equal to 1/2, so u 0 and half this is equal to 1/2, this implies 1/2 equal to 1/2 into f of 0 plus half plus f of 0 minus half, clear। so this is equal to 2/2 cancel, 1 equal to f of half plus f of minus half, and f of half का जो value this is equal to the value of f 1/2 is 1/4, clear। so 1/4 plus f of minus 1/2, clear। so this is equal to f of minus 1/2 is equal to 1 minus 1/4, this is equal to 3/4, clear। now we have to calculate the value of u 1/2 and 1, clear। now u 1/2 and 1 this is equal to half of f of half plus 1
plus f of half minus 1. So this is equal to 1 by 2 into f of 3 by 2 plus f of minus 1 by 2, and the value we all know all the values. So f of 3 by 2, the value of f 3 by 2 is equal to this 7 by 4, and f of minus 1 by 2 means 3 by 4. So put the just the value. So 7 by 4 plus 3 by 4. So this is equal to 1 by 2 into 10 by 4, which is equal to 5 by 4. Clear? So the clear answer is 5 by 4. Option B is correct here. Now go to the next question. This question number 85. This is a very important problem and interesting problem. It is required to solve the Laplace equation del t del x2 plus del t del yt, where these are two conditions given satisfying the boundary conditions, this and this and this. If Cn are the constant, then the equations of homogeneous boundary conditions determine the fundamental set of solution is of the form. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड ज्यादा कैलकुलेशंस भी हो थोड़ा सा. तो देखो पेशेंस रख के कैसे होता है. देखो ये जो कंडीशंस गिवन है इस कंडीशंस हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं. फर्स्ट लेट अस टेक अप्लाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. ओके, यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स into y y. Clear? So now put the value. The equation is u x x plus u y y is equal to 0. Okay, so if we put this value, we get x double dash y plus y double dash x is equal to 0, and now we get 1 by x into x double dash this is equal to minus 1 by y y double dash this is equal to constant, suppose mu say. Okay, so the two equations are x double dash minus mu x this is equal to 0, number 1, and sorry, this is number 1 and this is number 2, and then from this we get y double dash plus mu into y is equal to 0. Okay, this is number 3 suppose. Okay, now we apply, now we find the boundary conditions including x and y. So given the boundary conditions are u x0 equal to 0, so u x0 this is equal to 0, that means x x and y 0 this implies 0, and now we now write x x not equal to 0. If why, since if x equal to 0, then we get u x0 equal to 0, which is a trivial solution, which gives a trivial solution, but we are not interested in trivial solution. Okay, we are interested in non-trivial solution, that's why this term not equal to 0. So y0 this is equal to 0. Okay, this is any boundary condition. And again if we take the another one, देखो u xb, from here we get u xb equal to 0, so that means u xb, so x x into yb this is equal to 0, and this is not equal to 0, so yb is equal to 0. This is again another boundary condition. Okay, now if we solve this equation 3, then what we get, देखो यहाँ पर जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो केस 3 केसेस होगा. केस 1 इफ वी सॉल्व इक्वेशन 3. ओके, ये जो इक्वेशन ठीक है, इफ वी टेक mu equal to 0, then we get trivial solution. You can check it, but we are not interested in case 2. If mu equal to minus suppose lambda square, then this is also get trivial solution, we are not interested in it. And case 3 जो होगा वो this will be mu equal to lambda square, this gives non-trivial solutions. Okay, so now mu equal to lambda square means y double dash plus lambda square y this is equal to 0, and we also already know the solution. So y this is equal to a cos lambda y plus b sin lambda y. Okay, and if we apply y0 equal to 0, the initial condition, then we get a equal to 0, y0 equal to 0 gives a equal to 0. Clear? And the next one is yb, so y0 equal to 0. Now if we apply the initial condition yb this is equal to 0, then this gives b sin lambda y this is equal to 0. If b equal to 0, then trivial solution, we are not interested, therefore sin of lambda y this is equal to 0, which is equal to, we all know that, sin n pi. Okay, so this implies
y equal to n, sorry, lambda, sorry, just a minute. This gives, sorry, lambda equal to n pi by y. Okay, so lambda equal to n pi by y. Therefore, the solution y is equal to, suppose, b sine n pi by y. And if we take series of solutions, then we get, suppose, nth term yn y, this is equal to bn sine n pi by y. So this is the solution for y. Now we put the value of this lambda in the equation 2. Clear? In this equation. Now you can take this equation first or this equation first, there is no problem. Okay, so I will just you mind that we are interested only in non-trivial solutions. Okay, so now if we apply, then देखो क्या था वो इक्वेशन x डबल डैश माइनस जो होगा, सॉरी माइनस नहीं, माइनस लैम्डा स्क्वायर जो था, so lambda square into x is equal to 0, and if we put the value of lambda from here, then we get x double dash minus n square pi square by y square is equal to y x is equal to 0, and the solution is of the form x is equal to what, suppose c e to the power n pi by y. Okay, n pi by x into x. Just a minute, I think I missed it. Oh, sorry, this should be b, thank you, y b equal to 0. Okay, so this should be b, n pi by b. Okay, sorry, n pi by this should be b. Okay, n pi by this should be b, sorry for the mistake. N pi by b into x plus b exponential minus n pi by b into x. Clear? So the solution is of the form u(xt), this is equal to xx into yy. So the solution is and here if we take xn equal to cn and plus dn. Okay, exponential जो टर्म था वो तो होगा ही. So xn x this is equal to जो होगा, फर्स्ट लेते हैं bn इंटू साइन ऑफ n pi by by into cn exponential n pi by x into b plus dn exponential n pi x by minus n pi x by b. Okay, this is the solution. And sorry, just a minute, ये नहीं होगा, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करना होगा फर्स्ट. एंड देखो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करना मैं भूल गया. देखो और एक कंडीशन था u0y दिस इज इक्वल टू 0. सो इफ वी अप्लाई u0y दैट मीन्स व्हाट, x u0y इक्वल टू 0 इन now x0 into y this is equal to 0, this is not equal to 0, since if we put this term equal to 0, then we get also trivial solution. So this means x0 equal to 0. Now if we apply to this here x0 equal to 0, that means we get x0 equal to 0 to here. Okay, so 0 equal to c plus d, that means d equal to minus of c. Therefore the solution xn is equal to cn into e to the power or exponential n pi x by b minus exponential minus of n pi x by b. Okay, we put this value here. This means cn into, just change the color, so this is into exponential n pi x by b minus exponential minus n pi x by b. Clear? So this is equal to bn cn आ रहा है, तो bn cn को और एक मान लेते हैं en into sine of n pi y by b, and this term goes to what, sine hyperbolic, यहाँ पर एक by 2 आएगा ना, तो 2 sin hyperbolic 2 को इसके साथ मिक्स कर दो, तो sin hyperbolic क्या आएगा, n pi x by b. क्लियर? सो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है वो क्या है, समेशन फॉर्म होता है, un जो होगा यहाँ पर un लिख दो,
तो u x t दिस इज इक्वल टू जो होगा summation n equal to 1 to infinity un xt. Okay, so un xt means summation n equal to 1 to infinity en into sine hyperbolic n pi x by b into sine n pi y by b. Clear? So this is the answer, sine hyperbolic term and one sine term. That means the option here, the option option A is correct. Yeah, one sine hyperbolic n pi x by b, sine n pi y by b with a constant term cn. Okay, here we have calculated the constant en. तो जो मतलब लिख सकते हो आप लोग क्या करते हो, ठीक. तो दिस विल बी द आंसर. क्लियर? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. नाउ ये जो प्रॉब्लम 86 है ये इसके अकॉर्डिंग ही मैं लिया हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ये एक बार देख सकते हो आप लोग. जो 86 जो क्वेश्चन है देखो, द कंडीशन ऑफ द बाउंड्री प्रॉब्लम फ्रॉम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम u x x plus u y y equal to 0. ठीक है, u x x plus u y y is equal to 0. x belongs to 0 pi and y also belongs to 0 pi. ठीक, तो u x0 equal to u x pi equal to u y0 equal to 0. Any solution of this boundary value problem? What the solution? The general solution, जो the last and solve problem we just solve, the conditions will be g x belongs to a 0 a and y belongs to 0 b. That means just take a equal to pi and b equal to pi. In the above solution we put the value of a equal to pi and b equal to pi. So the above solution is what? Un xt. So the solution, just write here u xt, this is equal to summation n equal to 1 to infinity one constant term, suppose n, into sine hyperbolic n pi x by b into sine of n pi y by b. Clear? If we put a equal to b and b a equal to pi and b equal to pi, then we get the answer. xt, this is equal to n equal to 1 to infinity a n, pi se pi cancel, so sine hyperbolic n x just into sine hyperbolic n y. Clear? देखो इससे बेस अकॉर्डिंग सेम प्रॉब्लम है. ठीक है, देखो जस्ट अनदर प्रॉब्लम. दिस इज ए ऑप्शन क्लियरली करेक्ट. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. The next problem also same problem. Okay, the solution just we write. देखो, consider the boundary value problem u x x plus u y y equal to 0, x belongs to 0 pi, y belongs to 0 pi and u x0 equal to u x pi equal to u x0 equal to 0. इतना तक ठीक है. If an additional boundary condition u x pi y this is equal to sin y satisfied, then the value of u x pi by 2 equal to, जो लास्ट जो सॉल्यूशन का आंसर आया था वो क्या आया था? पाई 0 पाई इंटरवल में ही है, सेम ही, तो ये आया था इसका आंसर. ठीक है, देखो just we write here the solution of the above problem in the same interval. So u x t is equal to summation n equal to 1 to infinity n in the interval 0 pi x y belongs to 0 pi. Okay, so this is equal to sine hyperbolic nx into sine n y. This is the answer in the last question. Okay, now if we take the first term only, since here no summation term included, that means we can take the u x t and if we write here n, so u x t equal to, and take the value of n equal to 1, so this gives sine hyperbolic x and sine y. Okay, now if we calculate the additional, apply the additional boundary condition u x pi y equal to y, so u x, first calculate x t, this is equal to simply cos hyperbolic x into sine y. Okay, this is the solution u x, and u x pi y, this is equal to what? Sine y. That means sine y this is equal to cos hyperbolic pi, सॉरी ये n यहाँ पर होगा, n यहाँ पर होगा. ठीक है, तो a यहाँ पर सपोज a लिखते हैं इसको सॉल्यूशन को. ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक a साइन हाइपरबोलिक पाई into sine of y, sin y cancel from both sides, so this implies a into sine hyperbolic means exponential pi plus minus
minus exponential minus pi by 2. This is equal to 1. Okay, so this means what? The value of a is constant 2 by e to the power pi minus e to the power minus pi. Okay, now we have to find the value of u x pi by 2. That means first u x t के जो वैल्यू आप आया कांस्टेंट के वैल्यू पुट करने से बाद यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन. Okay, so this means 2 by e to the power pi minus e to the power, this will be minus pi into sine hyperbolic x sine y. Okay, now put y equal t equal to pi by 2, sorry, y should be y, it should be y, u x t nahi, u x y. Clear? So u x pi by 2, that means 2 by exponential pi minus exponential minus pi sine hyperbolic x into sine pi by 2, and sine pi by 2 means 1 and sine hyperbolic को put कर दो. So 2 by e to the power pi minus e to the power minus pi into e to the power, sorry, this should be, oh, this should be hyperbolic cos na, so this is plus. Clear? This is plus, sorry, exponential x minus exponential minus x by 2, 2 cancel. So जो आंसर आया क्या, is equal to exponential x minus exponential minus x by exponential pi plus exponential minus of pi. So this is the answer. The answer is option C. जो 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस किया, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंटररिलेटेड प्रॉब्लम है. If each of this problem comes in the exam, then you have to calculate the whole calculation. Okay, I'll just sort in this session. Okay, but you have to calculate more. And this is question number 80. This is a statement based question. Which of the following concern is the true of the Newman problem for Laplace equations on the smooth bounded domain? जो न्यूमैन प्रॉब्लम का जो कैसा सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर क्लियरली यूनिक सॉल्यूशन होगा न्यूमैन एंड डिरिचलेट में भी, क्योंकि यहाँ पर ऑल जो बाउंड्री कंडीशंस होता है वो गिवन होता है, ऑल बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा ना. ओके, so this is the answer. Now question number 99. This is another type of questions, comes in CSIR NET in 2015 here I say. So the problem says that let u x y be the solution of the equation, this is Laplace equation, which tends to 0 at y tends to infinity and has the value sin x at y equal to 0. That means what? U x 0, this is equal to sin x. Okay, this is given. Then here 4 options are given in the summation form and sin nx plus b form. तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो ये सिमिलरली यहाँ पर अप्लाई करेंगे यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स एक्स इंटू वाई वाई एंड पुट इन द इक्वेशन सिमिलर एज वी हैव कैलकुलेट दिस टू यू एक्स डबल डैश माइनस यू एक्स इज इक्वल टू यू म्यू इंटू एक्स दिस इक्वल टू 0 and म्यू इंटू वाई दिस इक्वल टू 0, and if we take म्यू इक्वल टू minus lambda square in equation this, we get general solution. And the two case I avoid in this here, you can also check for mu equal to 0 and mu equal to lambda square for equation 1. See, I take in the last problem, जो above problem किया वहाँ पे देखो ये equation first लेके solve किया था, and in this problem we had take the equation 1. ओके, सो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऐसे ही में ऐसे सॉल्व किया, जो एक प्रॉब्लम में एक एंड दूसरा प्रॉब्लम में दूसरा. ठीक है, तो ये देख सकते हो आप चेंज जो है. So in this one we get non-trivial solution for this, and for these two cases here we get trivial solution. We are not interested in that. So x equal to we get a cos lambda x plus b sin lambda x. For mu equal to minus lambda square we get y equal to this. So x equal to this and y equal to this. You can see this. So the general solution is this just product. And now the initial conditions are given, u x0 equal to u x y tends to 0 as y tends to infinity. That means y tends to infinity means this c constant 0 होगा, so this c constant is 0. And for y equal to 0 u equal to sin x, जो conditions given है initially, so u x0 equal to sin x here. Okay, so u x0 equal to a cos lambda x plus b sin lambda x plus d into 1. We just put here d in this term y equal to 0. Okay, so that this gives 1, and sin x this is equal to this. And if we compare both sides, then we get a equal to 0 because there is no term
of cos x in left side. So a equal to 0. B and D, this B and D is the coefficient of sine term equal to 1 and this lambda equal to 1 if we compare both sides. Okay, so uxy equal to the solution is of the form BD to sine x into exponential y from this equation. Okay, from this we get the solution. Okay, now if we take BD equal to 1, then we get the solution is of the form sin x into exponential minus y. Okay, now if we see the options, first options, if we take a1 equal to 1 and an bn are constant, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, a1 equal to 1 means फर्स्ट जो टर्म होगा u equal to 1 into sin n की वैल्यू 1 means x प्लस bn नॉन जीरो, तो b1 होगा एंड एक्सपोनेंशियल माइनस n स्क्वायर y होगा. बट यहाँ पर ये टर्म प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर जो आ रहा है, मतलब हम जो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये इससे इस तरफ से नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये यहाँ पर सॉरी ये जो बी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट होगा. देन ऑप्शन इफ यू सी ऑप्शन ए, देन देखो अगर ए एन बी एन आर आर्बिट्ररी नॉन जीरो कांस्टेंट, तो यहाँ पर बी एन रह जाएगा एंड ए एन भी रह जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है इससे. ठीक है, कंपेयर करो, जस्ट कंपेयर, यू हैव जस्ट कंपेयर, जस्ट कंपेयर. एंड देखो ऑप्शन सी में जो है ए वन इक्वल टू 0 1, बाकी जो रिमेनिंग टर्म वो 0 है, तो फर्स्ट जो टर्म आएगा यू इक्वल टू ए वन मीन्स 1 इंटू साइन n means x plus bn का टर्म 0 फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 1, सो प्लस 0 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस एन वाई प्लस बाकी रिमेनिंग ए एन 0, मतलब बाकी रिमेनिंग जो है 0 आएगा सामने सामने. तो ये तो फॉर्म में आ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर डायरेक्टली करेक्ट होगा, क्योंकि जो वी हैव सॉल्व दिस, सो हियर दिस इज द सॉल्यूशन. इफ वी कंपेयर दिस, देन सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर. एंड इफ यू सी ऑप्शन डी, देन वेयर bn इक्वल टू 0 बट n आर ऑल नॉन जीरो, दैट मीन्स जो सॉल्यूशन आएगा वो इज ऑफ द फॉर्म जो होगा u इक्वल टू समेशन n इंटू साइन ऑफ nx, ओके, इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस y n स्क्वायर y, बट n स्क्वायर y तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, जस्ट ny आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर सी ऑप्शन सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा एंड ऑप्शन डी भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक, ये भी अनदर प्रॉब्लम है. नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. This is the same problem as question number 89, and these two problems comes in the two consecutive year of the CSIR NET exam. Okay, so यहाँ पर देखो इसका जो सॉल्यूशन आता, यहाँ पर देखो सिर्फ जो चेंज है, यहाँ पे जो चेंज है सिर्फ यहाँ पे cos x है एट t इक्वल टू 0, दैट मीन्स u x t जो वैल्यू होगा ये यहाँ पर 0 होगा. ठीक है, एंड इफ वी देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था लैप्लास इक्वेशन, एंड यहाँ पर भी है जो है, यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर हीट इक्वेशन. ठीक है, तो हीट इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो लैप्लास अप्लाई करके, ठीक है, सिमिलरली एज यू सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर लैप्लास अप्लाई करके ही क्या कर सकते हो. ठीक है, लैप्लास अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यू एक्स 0 का वैल्यू गिवन है, तो ये लैप्लास से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टेंस टू 0 एस टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करना होगा. ठीक है, ऑफ वेरिएबल, सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 89. There is no difference in question number 89 and question number 90, and if you apply this, then option C and D यहाँ पर true होगा. You can do this similar problem है, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर. ठीक है, तो C and D यहाँ पर true आएगा, आप लोग चेक करके देख सकते हो. So in this video, this is the last question for, and so if you like the content, then please give a like to this video, share with your friends, and subscribe the channel. Thank you friends, see you again in the next video. Thank you.